सो हेलो सीकर आर्मी। सो यार, आज का टॉपिक थोड़ा सा सीरियस है बट समझना हो तो बहुत ही अच्छा है। तो हम सब, मैं भी, मेरे को भी मिला के, हम सब सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हैं। तो इसी बेसिस पे जो सोशल मीडिया है वो क्या करती है, आप सबको पता है सोशल मीडिया फ्री क्यों होती है? चलो, फ्री अगर आपको ऐसा जानना है कि क्यों है ये सब, तो अभी जाके वॉच करो नेटफ्लिक्स की न्यू सीरीज़ जो कि अभी 1 मंथ पहले ही रिलीज़ हुई है, द सोशल डायलमा। उसमें आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि सब क्या होता है। चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। डू यू नो कि आपने कोई चीज़ सर्च करी, मान लो आप एक छोटा सा सनग्लास ही खरीद रहे हो, चाहे वो गुच्ची का हो चाहे वो राडो का हो, तो आपको पता है जो गूगल है वो आपका डाटा रिकॉर्ड करता है। ऑब्वियस सी बात आपको पता होगा कि हाँ, आगे चल के वो जब दोबारा किसी को सर्च करने जाते हो या उसका कोई सेम कैपिटल लेटर आता है तो वो सर्च लिस्ट में दिखाता है, तो आपको ये पता होगा। लेकिन क्या आपको पता है यही सब आपके पूरी जहाँ जहाँ आपका गूगल अकाउंट लिंक है उन सब पे एड्स भी इसी हिसाब से आते हैं? नहीं पता होगा, बट आपको ये सब एक्सप्लेन वे में समझाया जाएगा इस न्यू नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में, द सोशल डायलमा। ये सीरीज़ मैंने भी अभी तक नहीं देखी है, तो मैं भी देखूंगा बट मेरे को मिल नहीं रही है कहीं पे। तो इसका ट्रेलर देखते हैं, आपको समझ भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। फिर लास्ट में थोड़ी सी बातें और करेंगे। When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident. That's a design technique. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. I was the co-inventor of the Facebook like button. I was the president of Pinterest. Google, Twitter, Instagram. There were meaningful changes happening around the world because of these platforms. I think we were naive about the flip side of that coin. We get rewarded by hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. I always felt like fundamentally it was a force for good. I don't know if I feel that way anymore. Facebook discovered that they were able to affect real-world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. They are completely clueless. Fake news spreads 6 times faster than true news. We're being bombarded with rumors. If everyone's entitled to their own facts, there's really no need for people to come together. In fact, there's really no need for people to interact. We have less control over who we are and what we really believe. If you want to control the population of your country, there has never been a tool as effective as Facebook. We built these things and we have a responsibility to change it. The intention could be, how do we make the world better? If technology creates mass chaos, loneliness, more polarization, more election hacking, more inability to focus on the real issues, we're toast. This is checkmate on humanity. ट्रेलर अच्छा लगा, मेरे को तो बहुत इफेक्ट किया इस ट्रेलर ने। यार सबसे सही बात बोली है कि दे आर यूजिंग आवर साइकोलॉजी टुवर्ड अस, बट यार हमारी भी गलती है इसमें। अब अगर हम सब सॉर्ट्स ऑफ लें कि अमेज़ॉन, अलेक्सा, सब जानते हैं, हाँ वही अलेक्सा जिसने कैरी मिनाटी को कुछ साल पहले ये बोला था कि आपका चैनल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं उसी की बात करूँ तो उन्होंने अभी एक AI बनाया था, तो उस AI में क्या दिक्कत हुई मुझे नहीं पता, उन्होंने वो प्रोग्राम बंद कर दिया। क्यों? उनका सिंपल सा ये रीज़न था कि उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये इतना अच्छा वर्क कर रहा है। उन्हें ये पता ही नहीं था कि ये कैसे काम कर रहा है।
अब यार बिना किसी ह्यूमन कंट्रोल के या बिना किसी टेक्निकल सपोर्ट के ऐसा कोई एआई सिस्टम काम करना बहुत मुश्किल है, एक्सपेक्ट कि अगर वो खुद ना काम कर रहा हो। बट ऐसा अभी के मामले होना बहुत ही ज़्यादा टफ है, लेकिन अगर हो रहा है तो दिस इज़ द एंड ऑफ द ह्यूमैनिटी। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, बट दी सोशल डायलेमा मस्ट वॉच। मैं ये नहीं कहता कि हर एक चीज़ गलत है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गलत है, या मैं किसी पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कंपनी या स्पेसिफिक कम्युनिटी की तरफ कोई हेट नहीं फैलाना चाहता, बट जस्ट मैं सोशल और एक थोड़ा मेरा पर्सनल भी है, क्योंकि मैं भी खुद एक फेसबुक एडिक्ट रह चुका हूँ पहले भी। बट यार मेरे को भी निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, मेरे मम्मी पापा, मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। तो यार अपना जो सोशल मीडिया है इतना भी मत करो कि भाई आगे चल के आपको ही प्रॉब्लम हो इसको रिमूव करने के लिए आपके ज़िंदगी से। मैं बस इतना ही कहूँगा यार, जो चीज़ है कंट्रोल में रखो। यूट्यूब पे यार, यूट्यूब पे क्या होता है, बहुत सारी लॉजिकल चीज़ें भी हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी हैं। हाँ क्रिंज है, बट टिकटॉक या बाकी जो आजकल नए छोटे मोटे ऐप चल रहे हैं, नहीं यार इतना भी ज़्यादा नहीं है। और ना ही मैं क्रिंज फैला रहा हूँ, ना मैं क्रिंज की बात करता हूँ, छोड़ो यार वो बात रात गई बात गई। अब हमें बात करनी चाहिए तो सिर्फ इतनी कि यार फ्यूचर का सवाल है, कर लो थोड़ा सा, क्यों भाई। अब दूसरी बात, और लास्ट में एक ऐसी वीडियो चलेगी कि आपका नज़रिया बदल जाएगा सोशल मीडिया की तरफ। बट यार अब आप इसी की बात करो, जो ये क्लिप चल रही है आपने देखी अभी पीछे से, कि एक लड़की उठी, ब्रश किया, ये करा वो करा, फिर जाके अपने वहीं बेड पे गई कि मॉर्निंग पिक्स। यार तुम यार क्यों बनना है फेक सोशल मीडिया पे? ज़रूरी नहीं है कि तुम अगर किसी को अपनी चीज़ दिखाना चाहते हो तो उसको वो इंटरेस्ट आए तुम्हें देखने में। नहीं यार, नहीं होता ऐसा। मैंने भी कई चीज़ देखी है यार कि कुछ अपने लाइफस्टाइल दिखाते हैं, कुछ अपने ये दिखाते हैं, कुछ अपनी ऑडी दिखाएंगे। नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। जिसकी लाइफ है बस उसको अपनी लाइफ से प्रॉब्लम हो जाएगी। यार तुम्हारा फेक लाइफस्टाइल देख के ना ऑन सोशल मीडिया वो सामने वाला पर्सन अपने आप को गिल्ट में चला जाएगा, अपने आप डिप्रेशन में चला जाएगा कि हाँ भाई मेरे पास क्यों नहीं है। यार देखो, हम लोग जीते हैं सिर्फ एक होप पे कि अगर हम कोई बात करें तो सामने वाला हमारी बात समझे। लेकिन अगर वहीं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हम जो चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं उस चीज़ को हमें फेक बनाने में मजबूर कर दे, तो ऐसे प्लेटफॉर्म का क्या फ़ायदा है यार? नहीं चाहिए यार। यार ह्यूमन साइकोलॉजी को सबसे बड़ी बात टारगेट किया जा रहा है, द ग्रीड, प्राइड एंड और भी बहुत चीज़ें होती हैं, मेरे को नाम नहीं याद आ रहे हैं। यार बंद कर दो, क्यों अपनी नादानियों से किसी और को फ़ायदा दे? सही बात है कि नहीं? क्यों अपने चीज़ों से किसी और को फ़ायदा दे? तुम्हें पता है कितनी चीज़ें होती हैं, क्या होता है? वीडियो आ रही है, देखो। Social media remarks. Facebook comments have been pouring in after 4 people died while hiking. You're dealing with an addicted generation. This is a big time bomb ticking. These kids who commit suicide, you go look at their Instagrams, you would have no clue. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. People who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook. It'll destroy relationships, it'll cost time, and it'll cost money, and it'll make your life worse. To be human means that you are persuadable in every single moment. It doesn't matter what language you speak, it doesn't matter how intelligent you are. It's not about what someone knows, it's about how your mind actually works. We now know that many of the major social media companies hire individuals called attention engineers who borrow principles from Las Vegas casino gambling, among other places, to try to make these products as addictive as possible. We are all vulnerable to social approval. We really care what other people think of us. When you upload a new photo of yourself on Facebook, that's a moment where our mind is very vulnerable to knowing what other people think of my new profile photo. And so when we get new likes on our profile photo, Facebook, knowing this, could actually message me and say, oh, you have new likes on your profile photo. It knows that we'll be vulnerable to that moment because we all really care about when we're tagged in a photo or when we have a new profile photo. I mean, I think we can all feel it. And it's as if we've been infected. It's as if
They've drilled a hole in the back of our head, and now they've injected the virus, and now we walk around searching for feedback using social media. We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. In other words, it's highly, highly addictive. You have an entire generation that has access to an addictive, numbing chemical called dopamine through social media and cell phones as they're going through the high stress. They don't have the coping mechanisms to deal with stress. So when significant stress starts to show up in their lives, they're not turning to a person, they're turning to social media. They're turning to these things which offer temporary relief. We know, the science is clear, we know that people who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook. That's a problem. That's an addiction. If you're sitting in a meeting with people you're supposed to be listening to and speaking, and you put your phone on the table, you're just not that important to me, right? So you have an addicted generation that doesn't have the skill set to ask for help. Combined with the fact that they're so good at Facebook and Instagram, they're good at putting filters on everything. So they're good at showing you how smart and strong they are. These kids who commit suicide, you go look at their Instagrams, you would have no clue that they were depressed. People look like they have a much better life than they really do. People are posting pictures of when they're really happy. They're modifying those pictures to be better looking. People basically seem they're way better looking than they basically really are, and they're way happier seeming than they really are. So if you look at everyone on Instagram, you might think they're all these happy, beautiful people, and I'm not that good looking and I'm not happy, so I must suck. Some of the happiest seeming people, actually some of the saddest people in reality. Social media isn't real, but you don't ever see real life, the 99% of our lives, the behind the scenes, the unglamorous, unfiltered, day-to-day, bland normality. And you end up comparing your behind the scenes to other people's fake highlight reel and using others as a mirror or benchmark for how you should look, how successful you should be, or how you should live. You'll become your happier self when you stop putting pressure on yourself to be more like someone else. And they know that this causes depression. They're injecting things into your head that you didn't ask for. Our lives are becoming more transparent, just inevitably. It's just pulling us. It'll destroy relationships, it'll cost time, and it'll cost money, and it'll make your life worse. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? No. बस एक सिंपल ना ही तो करनी है, ये भी नहीं हो सकता हमसे. We have to win this war against this demon called social media. तो यार ना करना सीखो, इतना एडिक्ट मत बनो. हाँ, और ये मैं PUBG को भी कह रहा हूँ. So be safe and मिलते हैं अगली वीडियो में. और आज की वीडियो देखना मत भूलना, और जाके अभी देखो दी Social Dilamma. Signing off, Sika YT. I should tell my flow and now these niggas say I told ya.